on the column B, you see here total load is 800 to dead load hai, 50% of 900 dead load, it is 450. So 800 plus 450, 1250. In this way, you calculate what is the total load on column A and what is the total load on column B. So total load on column A is 850 and total load on the column B is 1250. Earlier, we used to give you the full load. This much load is on column A, but this much load is on column B. But here, based on the condition, you have to find what is the dead load and live load on the column. So 850 load is on the column A, 1250 load is on the column B. So total load will be definitely summation of these two, that is 2100 kilonewton. So rest of the thing is same. 0.5 meter he has given. Distance between them is also given. Everything is 5.5 meter. So this distance between the column is given. So you find the CZ. CZ मैं आपको जैसा बोला था वैसा ही तुम लोग कुछ करते ही नहीं. I asked you to do it by taking moments about A. When you take moment about the A, total load is 2100. 2100 into x bar, because this load is acting at CZ and distance from column A is x bar, and this is equal to second column 1250 into from distance to here is 5.5. So if you substitute here, x bar is equal to 3.27. Once you know the x bar, so what we want is we want the total length of the footing. To get the total length of the footing, first to find CZ to the left of the width of the footing. तो यहाँ तक x bar है, इसके बाद इसका आगे का ऐड करो आप. What he did is this is 3.27 plus 0.5, because from here it is 0.5 because it is given. The footing offset from center of column should be 0.5 मीटर, मतलब center of column से 0.5 मीटर है और वो 0.5 मीटर और CZ 3.27 है, मतलब end of A footing से CZ का जो length है वो 3.27 plus 0.5 है. लेकिन हमको total length of the footing होना. Total length of the footing कैसा निकालते हैं आप? Total length of the footing is 3.27 plus 0.5. तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का आया, ऐसा दो साइड है. From here to here one side is there, from here to here another side is there. So total length of the footing is you multiply this one 7.5 meter, so approximately we take 8 meter. Approximately we take 8 meter. Once the length is known, length of the footing is known, what we need is now it is a rectangular footing, width of the footing is known. But here soil pressure is given. What is the soil pressure? Soil pressure is for 50% reduced load 150. Now pressure is equal to load by area, isn't it? Pressure is equal to load by area. Therefore area is equal to load by pressure. The same way you have to take. देखिए, pressure is equal to load by area. What I want is area. Area is equal to calculation करो. लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या है कि लेंथ भी आपको दिया हुआ है, तो सिर्फ ब्रेड्थ निकालना है. इस तरीके से आप ब्रेड्थ फाइंड आउट करो. दिस यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करा आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ. यहाँ डायरेक्ट किया, प्रेशर इज इक्वल टू लोड बाय एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू लोड बाय एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू लोड बाय एरिया. एरिया इज इक्वल टू लोड बाय प्रेशर. एरिया इज इक्वल टू लोड इज 2100, प्रेशर इज 150. बट एरिया को हम लिख सकते लेंथ इनटू ब्रेड्थ. Therefore breadth is equal to length को इस तरफ ला लो 8 मीटर. So this is going to be the width. This is going to be the width. So width of this is 1.8 meter. 1.8 meter. In this way the width is decided. In the second case what he did is same thing, but he has taken the live load fully. And he has taken the live load fully. After taking the live load, deciding the eccentricity. Eccentricity कैसा निकालना मालूम है आपको, कहां तक लोड ऐड कर रहा. P maximum is this formula. This also I told you. P minimum is this formula. Using this one, he did the things. And what is the length he has provided? Length is 8 meter. Breadth is 1.8 meter. यहीं पे डिजाइन हो गया. यहाँ पर maximum pressure और minimum pressure उसके लिए लेके चेक करें. So this is the method for strap footing. This is the method for strap footing. In the slide, one extra problem I have given you. Proportionate strap footing for the following data. Allowable soil pressure दिया, 25 दिया, इसके लिए 50% condition रखा, distance between center of the everything I have given here. This I will share with you. Or I don't know whether I shared with you. So please solve at least one problem. अब आप बोलेंगे सर हमको एग्जाम में डिटेल प्रॉब्लम जब नहीं आ रहे तो हम क्यों करना.
ऑफ कोर्स आपका भी बोलना सही है, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज ऑन एमसीक्यू टाइप. नाउ मेरा टीचिंग एग्जाम्स आर नियरर नाउ, सो लिटिल बिट आई हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड यू हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ स्टडिंग आल्सो. अगर से ऑफलाइन एग्जाम रहते थे तो ओनली डिजाइन के प्रॉब्लम आते थे. डिजाइन अ पाइल कैप, डिजाइन अ पाइल फाउंडेशन, डिजाइन अ स्ट्रैप फुटिंग, डिजाइन अ कंबाइंड फुटिंग, और थोड़ा बहुत थ्योरी आता था, डेरिवेशन आती थी. And that time I have to do the maximum problems and you have to solve maximum problems and maximum design. Now such thing is not needed. So what you have to do is you have to study at least one design problem, उसके सारे steps देखो, उसके बाद एक प्रॉब्लम आप करो, that much is enough. क्योंकि इसी में से बीच में से कुछ आपको एग्जाम में पूछता, you will ask in the examination. So this completes the first part, that is bearing capacity and shallow foundations. Shallow foundations, shallow foundation में spread footing, strap footing, combined footing, mat और raft foundation. mat और raft foundation का भी एक डिजाइन बताता हूँ मैं, बहुत लेंथी है, फिर भी एक आपको करके बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट में सिलेबस और रिड्यूस किया आपका, वेल फाउंडेशन और सब निकाल दिया. ओनली टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर. वन इज पाइल फाउंडेशन, one is pile foundation and second is machine foundation. तो अब दो चैप्टर्स है, तो still time is there, one or 8 10 12 days are there. Now what I do is I will teach you pile foundation in detail as possible. अब बोलेंगे सर आप डिटेल हमको क्या जरूरत है, जो जो डिजाइन है उतने बता दो. ऐसा नहीं है. what is happening I will tell you by my experience. As you are in PG, so in the university जियोटेक के हैंड्स बहुत कम है. सीनियर्स जियोटेक की कोई भी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल. सो व्हेनेवर द क्वेश्चन पेपर सेटिंग विल बी देयर, नो. सो यूजी में तो मेरा नाम है, डेफिनेटली आई गेट द चांस एवरीवेयर, बट अभी पीजी में मेरा नाम नहीं है पैनल में, इसलिए कोई स्ट्रक्चर वाला ही आपका क्वेश्चन पेपर सेट करेगा मोस्टली. तो व्हाट ही डज इज, तो व्हेनेवर ऑफ कोर्स ही हैज आल्सो लिमिटेशंस, उसको भी सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इतने बड़े बड़े डिजाइन तो नहीं दे सकता. तो क्या हो रहा है मैं बताऊं आपको कि व्हाट ही सेटिंग इज, व्हाट आई फाउंड फ्रॉम द लास्ट पार्ट इज, जो बेसिक है ना, अब बेरिंग कैपेसिटी के आप यूजी लेवल पे जो बेसिक है, और जो पाइल है, शैलो फाउंडेशन है, जो आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका बेसिक है, वो सब पूछ लेना. और अब हम जब पूछेंगे सर ये सिलेबस को नहीं है, तो अरे ये तो उसका रिलेटेड है, यू शुड नो इट. अब पाइल फाउंडेशन का और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा पाइल फाउंडेशन और बेरिंग कैपेसिटी, और इनका ही थ्योरी रिलेटेड ज्यादा पूछा, और एक दो क्वेश्चंस तो स्टिल आई रिमेंबर सॉइल एक्सप्लोरेशन के भी पूछ लिया हो, जबकि वो आपके सिलेबस में था ही नहीं. तो बिकॉज डिजाइन के प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज में देना अ ग्रेट हेडेक फॉर द टीचर. तो जो थ्योरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वही आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो आपको अब कैसा पढ़ना है, मैं आपको एमसीक्यूज आपको देते जा रहा हूं. yesterday I shared near about 70 MCQs of bearing capacity. Today if somebody is coming to the college, so please help me and we will prepare on shallow foundation and then for pile foundation, और उसके बाद machine foundation के भी हम टोटली प्रिपेयर करेंगे. वो MCQs आप थोरोली प्रिपेयर करो, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आपको डिजाइन नहीं पढ़ना है, डिजाइन आप पढ़ो, डिटेल में अच्छी तरह पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो. 10-10 12-12 प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है. एक प्रॉब्लम डिजाइन टोटली यू फॉलो इट, अच्छी तरह कर लो, जो मैं कराता हूं आपको उसी टाइप का एक आप प्रॉब्लम करो, क्योंकि एमसीक्यूज के क्वेश्चन उसमें से ही कुछ बीच बीच में से पूछ सकता, कुछ फॉर्मूला पूछ सकता है या उस टाइप का पूछ सकता. So when it is MCQ means it is totally undesirable that he will ask detailed design for 1 mark. तो इस मेथड को आपको दिमाग में रख के पढ़ाई करनी. Got it? Not only for my subject, for other subjects also. So detailed 8-8 10-10 पेज लिखने के, 4 पेज लिखने के डेरिवेशन कोई भी टीचर चाह कर भी नहीं पूछ सकता. And one more thing, again and again I am telling you, if my subject is very important to you for GATE exams as well as for any exams, and especially bearing capacity और पाइल फाउंडेशन आप डिटेल में करो. बेरिंग कैपेसिटी में मैं आपको डिटेल में बताया, पाइल फाउंडेशन में भी मैं आपको मैं थोड़ा रिलेटेड रहने दो, नहीं रहने दो, डिटेल में पढ़ा दूंगा.
फिर सारे डिजाइन भी एक दो 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 सब मेथड से करा दूंगा, स्टैटिक लोड के कराऊंगा, डायनामिक के भी प्रॉब्लम कराऊंगा, मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा एटलीस्ट, बिकॉज देखिए डायनामिक आपके सिलेबस में नहीं है, लास्ट टाइम डायनामिक पे एक फॉर्मूला पूछ लिया, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट as you study as broad as possible, but keeping in mind that it is MCQ type of question. It is MCQ type of question. Okay, after completing this one, now we will move for next part, that is called pile foundation. That is called pile foundation. Okay, now coming to the pile foundation. First of all, now the question arises, so what is pile foundation? So as I told you, what is foundation? Foundation is the part which supports the superstructure. Now again, I told you there are two types of foundation. One is shallow foundation, another is a deep foundation. So when we take shallow foundation, when we go for deep foundation, that also I explained to you. See, when the soil is, I mean your load is very less. आपको छोटा सा घर बांधना है, 30-40 में छोटा सा घर बांधना है, डबल मंजिल भी नहीं है आपका घर, लोड कम आ रहा, तो आपको डीप फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको शैलो फाउंडेशन की जरूरत है. It means that whenever the load of the superstructure is less, you go for shallow foundation. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, सपोज करो आप लोड भी कम है, लेकिन आपका घर जो बांध रहे ब्लैक कॉटन सॉइल में, पंढरपुर में मैक्सिमम ब्लैक कॉटन सॉइल है. If you come to my place, I will tell you it is totally hard place. इसलिए हमारे पास इंजीनियर इतने मजे में रहते, कुछ उनको हेडेक ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैक्सिमम हार्ड स्ट्रैटम है. हार्ड स्ट्रैटम है तो इंजीनियर को दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, कितना भी खोदो, थोड़ा खोदते आपको स्ट्रांग फाउंडेशन मिलता, ऊपर आप कंस्ट्रक्शन को जो भी करो स्टेबल रहता. बट इवन द लोड इज लेस बट सॉइल इज वीक, सो यू हैव टू गो फॉर इंप्रूवमेंट टेक्निक. You have to improve the soil. कुछ अलग अलग तरीके से ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक एक लंबा टॉपिक है. कभी हम लाइम मिलाते, कभी सैंड्रेस बनाते, कभी रेनफोर्समेंट करते, कभी फाइबर ऐड करते. समथिंग वी डू एंड वी विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, एंड आफ्टर दैट अगेन वी गो फॉर शैलो फाउंडेशन. लेकिन अगर से सॉइल बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है, मतलब स्वेल होता, करोजिव होता, इस टाइप का सॉइल है, सॉइल बहुत ही वीक है, और या हो सकता है सॉइल थोड़ा बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन आपका लोड बहुत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे आप, मॉल्स बना रहे बड़े बड़े, तो एट दैट टाइम आल्सो यू हैव टू गो फॉर डीप फाउंडेशन. फॉलोड? You have to go for deep foundation. Technically definition है, उतना मायने नहीं रखता. What is deep foundation, what is shallow foundation, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. This is the common question to be asked. So basically इतना याद रखो, हो सकता है MCQ में आपको पूछ ले कि क्या क्राइटेरिया है shallow और पाइल के, सॉरी डीप को डिफरेंशिएट करने का. तो विड्थ ऑफ द फुटिंग जो है, उस डेप्थ ऑफ द फुटिंग विड्थ से कम है या उसके बराबर है, तो ऐसे फाउंडेशन को बोलते हैं shallow foundation. Such foundations are called shallow foundations. Whereas अगर से depth बहुत ज्यादा है, depth बहुत ज्यादा है, then it is called deep foundation. So now in deep foundation, for you pile foundation is there. pile foundation के बाद grilled foundations थे, उसके बाद caissons थे, well foundations थे, sheet pile walls, ये अलग अलग टाइप के deep foundations है. लेकिन लकीली बोलो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, whatever you think, that has been removed. We have removed that one to make it your 80%, so that thinking that it is not necessary, little bit difficult, we have removed well foundation and caisson parts along with grillage foundation. So now the thing is, the detailed chapter only left is pile foundation. तो पाइल फाउंडेशन में आपके सिलेबस में है पाइल को कैसा डिजाइन करना, अकेला रहे जब, सिंगल रहे जब, फिर पाइल व्हेन इट इज इन ग्रुप हाउ टू डिजाइन, समझ में आपको, व्हेन इट इज सिंगल हाउ टू डिजाइन द पाइल फाउंडेशन, व्हेन इट इज इन ग्रुप हाउ टू डिजाइन इट, सो हाउ टू फाइंड द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशंस. देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलेज एंड वी हैव टू हियर गो फॉर स्टैटिक फॉर्मूले. तो अकेला रहे जब पाइल कैसा डिजाइन करना, एंड व्हेन इट इज इन ग्रुप हाउ टू डिजाइन,
एंड देन अंडर रीम्ड पाइल्स, स्पेशल पाइल्स, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पाइल कैप का डिजाइन, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलता. आई विल सॉल्व इट वन प्रॉब्लम हियर. सो पाइल कैप के ऊपर अगर से ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो 100% एक क्वेश्चन आता था. आप कोई भी क्वेश्चन पेपर निकालो, एक 14 से 15 नंबर का डिजाइन ऑफ पाइल कैप बोल के क्वेश्चन आता था. सो बट अगेन here you are unfortunate, as MCQ type of question paper is there, that may not be asked, that may not be asked. So now we shall start from the basics of the pile foundation, thinking that you don't know anything here. So now pile foundation is one of the deep foundation. Pile foundation is one of the deep foundation, as the name suggests. पाइल्स कंक्रीट के पाइल्स रहते हैं, वैसे प्लास्टिक के भी रहते हैं, लकड़ी के भी रहते हैं, लेकिन लोड कम रहे जब यूज करते हैं, जनरली वी यूज पाइल फाउंडेशन. आपको ये सुनने में बहुत हल्का लग रहा है, आप फील नहीं कर रहे, आप यकीन नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े पाइल्स रहते, कितने बड़े बड़े पाइल्स रहते. और इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक your batch, this Manali, Priya, when you were in third year, near Mangalveda river we went, and there it was a pile load test you found. एक पाइल को उसके ऊपर टेस्ट कर रहे थे, पाइल लोड टेस्ट, आपको याद होगा. तो इमेजिन वो कितना बड़ा पाइल रहता. तो ऐसे कभी कभी तो 10, 15, 20, 50 तक पाइल्स इन ग्रुप दे विल टेक. 50 तक तो नहीं जाते, तो जनरली 12, 15, 25 तक पाइल्स ग्रुप में लेके वी सपोर्ट दिस सुपरस्ट्रक्चर. सो यू कैन इमेजिन पाइल मतलब क्या रहता, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता कंक्रीट का, या सिलिंड्रिकल नहीं, क्यूबाइड भी हो सकता है या क्यूब टाइप भी हो सकता है. उसको हम क्या करते हैं, सिंक करके ग्रुप में या कभी कभी अकेला, उसके ऊपर लोड सुपरस्ट्रक्चर लेता पाइल. और वो लोड वीक सॉइल से, क्योंकि जो भी सॉइल रहता जब व्हेन यू आर यूजिंग पाइल मींस वीक सॉइल इज देयर, तो उस वीक सॉइल से, फ्रॉम दैट वीक सॉइल द लोड इज ट्रांसफर्ड टू हार्ड स्ट्रैटम. that load is transferred to hard stratum. So this is a pile foundation. This is a pile foundation. So when pile foundation is used, I told you. And one more thing is, when constructions foundations are constructed into the water, deep waters, so there also pile foundations are installed. There also pile foundations are installed. Got it? So what is pile? So अब क्या होता है एमसीक्यू में बोलूं मैं आपको, पाइल फाउंडेशन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, ऑप्शन देता आपको. अब आप बोलेंगे सर हमको ये सिलेबस में था ही नहीं, हमको तो सिर्फ डिजाइन्स थे. सो दैट इज द डिफिकल्टी हियर. एंड एज आई टोल्ड यू, there is no, I mean, experts in setting the, I mean, hi-fi paper. So generally you will get a basic type of question papers and basic type of questions when it is MCQ type. ऑफलाइन एग्जाम रहते थे तो फिक्स्ड क्वेश्चन थे, एक कंबाइंड फुटिंग का प्रॉब्लम आता था, एक बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर प्रॉब्लम आता था, एक डिजाइन ऑफ पाइल कैप के ऊपर एक प्रॉब्लम आता था, और एक मशीन फाउंडेशन का आईएस कोड के ऊपर या तो थ्योरी आता था प्रॉब्लम. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर था, और वहां पर भी पास होना इजी था और पढ़ना बहुत इजी था. एक एक दो दिन पढ़ के पास हो गए सब. But now it is MCQ, so anything can be asked related to pile foundation, let it be whether basic or it is in the elaborate. Okay, so now what is pile foundation, when it is preferred, that also briefly I told you. After that, in detail theory has been given you. So when the pile foundation is necessary, भाई हमको पाइल फाउंडेशन लेना ही है. पाइल फाउंडेशन इतना है, मतलब इजी नहीं है. शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना इज टोटली इकोनॉमिकल, बट बाय टेकिंग अ पाइल, कंस्ट्रक्ट करना पाइल को, फिर उसको इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं है. इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने में आपके कितने पैसे निकल जाते हैं. सो व्हाट इज द नेसेसिटी, दैट व्हाई शुड वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन ओनली. सो सम कंडीशंस आर देयर. तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब आपका सॉइल बहुत वीक रहता और कंप्रेस होते जाता है, एकदम हाईली कंप्रेसेबल रहता, और आपको लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर नीचे स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटम को लेकर जाना है, तो एट दैट टाइम पाइल इज यूज्ड. समझ में आ रहा? एट दैट टाइम the pile is used. It means that whenever high compressible soil, weak soil is there in the upper stratum, and your aim is to transfer the load of the superstructure from the ground to the hard stratum through this weak soil, compressible soil, then pile is preferred.
At that time, pile foundation is preferred. At that time, pile foundation is preferred. Got it? Second is when the plan of the structure is irrelevant, means settlement जहां पर नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता, याद रखो पाइल विल रेस्ट्रिक्ट द नॉन यूनिफॉर्म सेटलमेंट. सेटलमेंट यूनिफॉर्मली हो रहा तो उतना डेंजरस नहीं रहता, बट वन एंड इज settling more than the other end, it is called non-uniform settlement. So pile foundation totally avoids non-uniform settlement. So if you want to avoid the non-uniform settlement, non-differential settlement, the non-uniform settlement, you can go for pile foundation. So you may ask, sir, in raft and mat foundation also you told that by constructing a mat you can avoid the non-uniform settlement. Of course it is true, but the thing is that is shallow type of foundation when loads are not that much heavy and soil is not that much weak. Just to see the avoid the non-uniform settlement, you can go for a raft or raft foundation or a mat foundation. But when the deep foundation you would prefer, there the pile foundation is preferred. Pile foundation is preferred. Got it? So now third is when you are constructing a foundation in water, deep water stratum, there also the pile foundation is preferred. There also a pile foundation is preferred. Certain more things are there. Pile foundation used to resist horizontal forces. See, in shallow foundation only vertical forces are used. So when horizontal or inclined loads are there, there also you can prepare pile foundation. Then piles are used for some special structures such as transmission powers, offshore structures. In expensive soils such as black cotton soil, where it is swell or shrink, there also pile foundation is prepared. So pile preparations are required when the soil conditions are such that erosion takes place. So all these are the conditions generally we use, we prefer pile foundation. We prefer pile foundation. Okay. तो बेसिकली तो इतने सब पढ़ने से अच्छा है, तो बेहतर चीज क्या बोलूं मैं आपको कि जहां पर सॉइल वीक है और जहां आपको डीप स्ट्रेटम को जाना है, सो देयर द पाइल फाउंडेशन इज प्रिपेयर्ड. और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज water structures. अगर deep foundation में जाना है, so that's why as Mumbai is situated on the seashore, so maximum pile foundation constructions are taking place in Mumbai. Okay, so waterfront water structures may be what deep में वैसे foundation आपको construct करना है, there also you prefer pile foundation. There also you prefer pile foundation. So now two things are there. So I think you are very much clear now. Two things. One is what is pile and when the pile foundation is needed. When the pile foundation is needed. Now we will classify the piles, and remember from MCQ point of view, this much classification of piles is very important. आप डिटेल में पढ़ो, मैं थोड़ा बहुत बताता हूं आपको, ज्यादा डिटेल में जाता. एक्चुअली दिस इज नॉट इन द सिलेबस, आई विल टेल यू. सिलेबस में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स नहीं बताया. Actually you have studied this in your UG, but when the question paper fellow is setting the paper, no, here he is taking the questions from such silly things also. So and ये ऑफलाइन एग्जाम में लिखना बहुत इजी है क्लासिफिकेशन, बट हर पाइल्स के छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. But in MCQ, such questions are going to be asked. Such questions are generally asked. Okay. So now we will classify the piles. So piles can be classified. Piles can be classified in different ways. So in three ways we will classify the piles. We will classify the piles in three ways. First is classification based on function. तो ऐसा नहीं कि हर पाइल एक ही काम करता, तो हर पाइल का अपना अलग अलग काम है. एक पाइल ये काम करता, एक पाइल वो काम करता. तो based on what type of function it is doing, what type of work is doing, we first classify the piles.
We first classify the piles. That is a first type of classification. Yeah, second is what type of material you have taken. Whether you have formed a pile by using the concrete, or by taking the timber, by taking the plastic, or whether it is made of steel. So based on the material, what type of material you have taken, the piles are classified. Piles are classified. That is the second pattern. And third is how you are going to install the pipe. आप पाइप को या ड्राइव कर रहे, एक बड़ा हैमर लेके ड्राइव कर रहे, such piles are called driven piles. Such piles are called driven piles. या आप बोर कर रहे, अगर कीचड़ उचड़ रहा तो बोर कर देते पाइप को बोरिंग के हिसाब से, ड्राइव कर रहे, बोल कर रहे, या वहीं पर तैयार करके इंस्टॉल कर रहे, कास्ट इन सिचु पाइल्स. So based on that one, how you are going to install, the piles are classified. The piles are classified. So classification of piles can be done in three ways. First, based on the function. Second, based on the material. Third, based on the installation. Third, based on the installation. Now, one by one, we will solve. Solve means one by one we will study. So first we will study how the piles are classified based on the function. How the piles are classified based on the function. Based on the function. So now, so on the function, piles are classified as end-bearing piles. Second is friction piles. Third is compaction piles. Fourth is anchor piles. Fifth is tension piles. Sixth is, this one is sheet piles, batter piles, fender piles, laterally loaded piles. Laterally loaded piles. So these are the various different types of piles classified on the base of function. It means that end bearing pile का अपना काम है, वो क्या काम है मैं आपको बताऊंगा. फ्रिक्शन पाइल का अपना काम है, कॉम्पैक्शन पाइल का अपना काम है, एंकर पाइल का अपना काम है. मतलब ये सभी जो क्लासिफिकेशन है, ये जो है किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. All these are based on their function. What type of function they are performing. What type of function they are performing. First, I will tell you what is end bearing pile and what is friction pile. तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पाइल का अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैसा निकालते हैं, पाइल मैकेनिज्म कैसा है, पाइल काम कैसा करता. सो वन फिगर आई विल शो यू हियर. थोड़ा उल्टा आया, मेरे को पता नहीं, सीधा करने में नहीं आ रहा है ये. कह रहा आप लोग ये मोबाइल उल्टा पकड़ करके पकड़ो, क्या करते. सी हियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंड बेयरिंग पाइल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंड बेयरिंग पाइल. ये पाइल है, यहाँ पर सभी सॉफ्ट कॉम्प्रेसिबल सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, तभी तो हम ले रहे. उसके बाद एक 2-3 मिनट के लिए रुक जाता. यू बेटर यू टेक द रेस्ट फॉर 2 minutes and then again you can rejoin. हाँ मैडम. हाँ हाँ